Hello everyone, my dear learner friends. So this is an audio and in this audio I'll discuss about the chapter. This is an overall discussion regarding the chapter. Already we have shared the videos materials regarding the video regarding the chapter, and I think you have already understood the main concept of the story, memories of childhood. Friends, this is a very interesting story, and this audio is an overall discussion. So I want your 100% listening, 100% attention. So friends, the writer of the story, the author of the story, she is Simons Bunyan, isn't it? Gertrude Simon Bunyan was born in the year 1876. She was an extraordinarily talented and educated Native American. She was who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevails towards Native American culture and women. As the writer, she adopted a pen name, that is Jitkalasa, and in 1900 she began publishing articles criticizing, the American Indian school. Her works criticized dogma, and her life as a Native American was dedicated against the evil oppressions. Okay, so friends, now I will explain the first part of the story, that is cutting my long hair. Okay, so let me introduce that part, the first story. The cutting of my long hair is a story that showcases the discrimination faced by the Indians in the Western world. The story describes how an Indian girl was forced to wear Western dress and cut her hair by her school authorities in order to make her look like an American student. जो पहला जो स्टोरी होगा उस स्टोरी में का नाम क्या था, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. उसमें राइटर का इंटेंशन क्या है वो दिखा रहा है कि नेट अमेरिका में इंडियन जो स्कूल होता है, वो जो इंडियन स्कूल में वेस्टर्न ट्रेडिशन चलता है, तो उसमें कैसा डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडियन को. और उन लोग का क्या था, वो टाइट फिटिंग जो वेस्टर्न कल्चर का ड्रेस है वो कैसा पहनना पड़ता था, और वो अपने अमेरिकन जैसे लगने के लिए हम हमारे इंडियन स्टूडेंट का बाल काट देते थे. तो ये जो कंडीशन है वो बहुत पैथेटिक है इंडियन के लिए, कि नहीं. हमारे लिए लॉन्ग हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इतना वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते. लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेट वहाँ पे किया था वो दिखाने के लिए जो पहला जो स्टोरी है वही है. ठीक है. So let now the summary of the first part, the cutting of my long hair. Okay. The story begins with Jitkalasa's first day in boarding school, Kalsal Indian School. It is a school open for native Indians where they are trained to leave behind their own culture and become a part of American culture. Jitkala describes that she really felt bad when a shawl is taken off her shoulders by the school authorities before entering into the dining hall. She also wonders about how other Indian girls agree to wear tight clothes, which were immodest according to her, as their whole body shapes could easily be seen. Even their hair was cut short, which was according to the author was not good. Her mother had told her only a coward's or a mourner's hair should be shaved off. Later on, Jitkalasa and the other girls were taken to the dining hall, where she was meanly noticed by a pale-faced woman for not following the table manners. Jedwin, another Indian girl, tells her that the pale-faced woman was decided to cut her hair. Jitkala revolts back as she doesn't want to look like a coward or a mourner. She hides herself under a bed in some room upstairs. Everyone starts searching for her, and finally she is caught. She is tied up and her hair is cut down. She felt so depressed and humiliated with his. She is reminded of her mothers who would have comforted her during this hard time. At the end, she submits her to her herders like an tamed animal. जो पहला स्टोरी है वो पहले स्टोरी में क्या दिखाता है कि जो अमेरिकन जो स्कूल है उसमें जो नेटिव अमेरिकन स्कूल है वहाँ पे इंडियन जब जाते थे तो वो कल्चर को चेंज करना पड़ता था. तो वो जो पहले स्कूल में गए थे जाने के बाद क्या हुआ, वो डाइनिंग का जो एटिकेट था उसमें पहले ही उनके जो शॉल था अपने शोल्डर से वो हटाने पड़ी थी. तो ये बात उनको खुद पसंद नहीं लगी थी. उसके बाद क्या हुआ, वो अमेरिकन अथॉरिटी स्कूल अथॉरिटी ने जो कपड़ा पहनने का जो
सिलसिला, मतलब जिनको मजबूर किया था वो भी पसंद नहीं था टाइट फिटिंग, क्योंकि टाइट फिटिंग कपड़े से बॉडी का पूरा 90% दिखाई देते थे, है कि नहीं। फिर जो लॉन्ग बाल था उनको भी काटना पड़ा, क्योंकि वो अमेरिकन ट्रेडिशन भी ऐसा था, तो वो ट्रेडिशन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, खुद का मजबूरी वहाँ पे था, तो वो मजबूरी में आके बाल भी कटना पड़ा। उसने रेसिस्ट किया था, बहुत प्रोटेक्ट भी किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो रोने लगा। फिर कोई नहीं था माँ जैसा आके समझाए सुलझाए और उनको प्यार दे, तो वो सिस्टम उस स्टोरी में आराम राइटर ने हमें दिखाया। ओके, so now I will explain the next part of the story, that is we to are human beings. So in this story, the same chapter but the story is different. Okay, so here now Bama is the pen name of Tamil Dalit woman for a Roman Catholic family. She was published three main works. It's a different writer, and her pen name is Bama. Okay, she was published three main works and autobiography, that is Kurukku 1992, and lots of novel. The story which we are going to explain, the following excerpt has been taken from Kurukku. Okay, it means Kurukku means palmyra, that means leaves, which with the stated edges on the both sides are like double edged swords. Okay, so in this chapter, the lesson describes the story of a fun-loving little girl. Okay, she loves to observe every bit of things happening in the around in her street. But one day, she, while noticing an incident, comes to know about the reality of a social evil in our country, that is a practice of untouchability. Okay, तो वो जो लड़की है वो एकदम एकदम फ्रीडम फ्री एक बर्ड जैसी उधर उधर घूमती रहती थी, और उनको बाहर का दुनिया बहुत पसंद थी। वो स्ट्रीट में सब जितना भी खेलता वो एंजॉय करती थी। लेकिन एक दिन उनका वो उसने एक इंसिडेंट देखने के बाद पहली बार रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि अनटचेबिलिटी एक्चुअली क्या है। व्हाट डू मीन बाय अनटचेबिलिटी, और शायद आप लोगों को समझ में आ ही गए हो कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, कि वीडियो में हम लोगों ने आराम से आपको डिस्कस किया है कि नहीं। So now the summary of the chapter, summary of the story, we too are human beings, very interesting. The story is written by Bama, who is one of the characters in the story. She is a little cheerful girl who loves to observe things taking place in her street. She says though it takes only 10 minutes to reach home from her school, but she takes about 30 minutes to reach her home from the school. She then explains the reason behind it. She says in the story, when she is on her way to home, she sees a monkey performing and snake charming doing some act with the snake, which was very interesting for her. Then there was a cyclist who was cycling from the past 3 days. There was one famous temple which had a big bell and tribal man who sells clay beads, needles, etc. She also comes across various snack stalls and street acts. Then she explains about how various political parties come to her street to give lectures. Also, as she proceeds further, she saw a landlord sitting and watching his worker work in the field. Then she saw an old man of her community handling a snack pack in a very strange manner, in the offering them to his landlord. She found it so amusing that she burst out into laugh. On reaching home, she narrates the story to her elder brother and starts laughing. He then tells her a real truth about her being from a low caste, and the upper caste people do not like the presence of or touch with the low caste as it would make them impure. She finds it so disgusting that she grows angry over upper caste people. Some days later, her elder brother is questioned about her to know about his caste. He then suggests her to study hard as the only thing which can change their life. She walks as per his suggestions and becomes topper of her class. This not only earns her respect but many friends too. So जो स्टोरी है, नेक्स्ट स्टोरी है, वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। उसमें एक लड़की बामा जो फ्री थी, बिंदास घूमती फिरती थी,
स्कूल जाने के टाइम लगता था 10 मिनट्स, लेकिन वो लगाती थी कितना, 30 मिनट्स। वो अब उसने एक्सप्लेन किया कि रास्ते में साइकिलिंग, वो चार लड़का उधर उधर से घूमता, मांकी डांस वो देखते थे, कभी कभी स्नैक का डांस, वो सब देख के टाइम पास करती थी। उनको वो बिंदास लाइफ बहुत पसंद थी। वहाँ पे एक टेंपल थे, टेंपल के नीचे में ट्राइबल आके वो क्लेट्स वो सब बेचते थे। वो देख के बहुत मज़ा आता था। तो उसने कहा कि एक दिन एक इंसिडेंट ने उनका आंखें खोल दिया। वो जा रही थी और एक एक लैंडलॉर्ड्स, माटी का मालिक जो होता है, ओनर, लैंडलॉर्ड्स, वो अपना खेती का काम देख रही थी और वर्कर्स काम कर रहे थे। ठीक है, और एक आदमी एक स्नैक्स का पैकेट एक डिफरेंट मैनर के साथ स्ट्रिंग्स में लेके ऐसे ऐसे के आए थे। आके वो अपने मालिक को दिया था। देने के बाद क्या हुआ, वो जो इंसिडेंट, वो जो एक्टिविटीज देख के बहुत हंसी, मतलब उसको बहुत हंसना आया था उस टाइम। तो वो जाके अपने भाई को बोला कि रास्ते में मैंने ऐसे कहानी देखा कि वहाँ पे ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। तो उनके भाई ने उनको समझाया कि ये एक हंसने वाला बात नहीं है, ये एक्चुअली हमारा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम लोग लो कास्ट है, उन लोग अपर कास्ट से है। अगर लो कास्ट वाले अपर कास्ट को कुछ टच कर देंगे तो क्या होगा, वो इम्प्योर या पल्यूट बन जाएगा। तो वो कास्टिज्म जो सिस्टम है, वो अनटचेबिलिटी, वो सुनने के बाद मामा को बहुत दुख लगा, गुस्सा भी आया। और उनके भाई ने उनको समझाया कि हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर हम क्लास में अच्छा करेंगे, रिजल्ट अच्छा पढ़ेंगे, करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा वो जो लोअर कास्ट का जो ट्रेडमार्क है, वो जो शील है, वो उठ जाएगा। तो उसने ये सजेशन सुनने के बाद बहुत मोटिवेशन मिला और वो उसने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर अपने क्लास में वो टॉपर बन गया। बनने के साथ साथ में उनका बहुत सारा फ्रेंड बनने लगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्टोरी, memories of childhood. In the first part, we have learned about Jitka Lasa, her experience in there in America. ओके, तो वो वहाँ पे पसंद नहीं थी वो जो सिस्टम, और कैसे मजबूरी में डाल के इंडियन स्टूडेंट को कैसे बाल कटना पड़ता था, क्योंकि बाल कटना हमारे इंडियन ट्रेडिशन में नहीं है। जो मॉडर्न से या जो जो क्या बोलते हैं, अ, जो अनस्किल्ड वॉरियर है, वही उसको बाल काटना पड़ता है। तो ऐसे वो दुख भरा कहानी पहले स्टोरी में हमें मिला। सेकंड स्टोरी में हमें क्या मिला कि बामा एक लड़की, वो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करती थी। उन्हें बात किया था, उन्हें अपने लाइफ के साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमें दिखाया। So we a story, memories of childhood. I think we have made ourselves clear regarding the chapter, isn't it? Vice principals have shared the videos, and this is an audio. So I think there will be no doubt